Hi, hello, namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. So this is our last lecture for free last free lecture on YouTube. And from now onwards, whatever the lecture that we will record or the live be asibo recorded asibo, that is only for our paid batch students. If you want to join the paid batch, the course fee is 8,000, in which you will have almost 80 to 90 hours of lecture, then full notes for your exam, full exam ready notes. That means you don't need to write any notes. We will give you entire notes for that. Along with that, we will provide you 24 tests, 12 sectional tests plus 12 full length tests. Everything will cover in 8,000. If you want to join our course, you can DM on WhatsApp or Telegram, or you can call also on this number 7989778247. Okay, let's start the video of today. It is lecture number 5. In previous lecture, we have completed carbohydrate, protein, fat or lipid, the concept of BMR, how to calculate BMR, and also we have completed cereals. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, so our next topic is to complete all the foods, all the different type of foods. So last class रे ଆମେ last was your protective food, जोटा हमर fruits and vegetables. ता आगरू आमे पढ़िथिले importance of fruits and vegetables, and also we have studied about the low fat diet. एटी आमे कोन करचंदी, we are reading it in a question answer format so that जेतल तुम exam hall को दिबो, you don't need to reform the answer. OPSC रे almost every time they ask the question or they repeat the question. Last year टिके change हेतला 2024 रे they start asking analytical question. So we are expecting this time also they will ask more analytical questions. केवल कोर कॉन्सेप्ट को बुझिले हबनी, कोर कॉन्सेप्ट को केवल बुझी की माने आमे खाली मन रख देले हबनी. We need to know the application aspect also. केमिति आमे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिवा से एस्पेक्ट को हमको देखिया पड़ियो. So in this course we will discuss आमे जहाँ भी सेक्शनल टेस्ट वगैरह करिवु, ओके, जहाँ भी आमे सेक्शनल टेस्ट वगैरह करिवु, most of them are analytical in nature. ठीक अछि. आउ FLT हो किंबा सेक्शनल टेस्ट सबुथ आमे एनालिटिकल क्वेश्चन पकेबु, दैट इज योर 24 सेट. ता सहित 2024 रो नै कि 2015 15 वर्ष 15 ईयर इनटू 2 पेपर एते सब जदी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करि जिबा, ठीक अछि. एटा देखो 10 वर्ष रो क्वेश्चन आंसर हे गेला, ता सहित 24 सेट हे गेला. एठी हला केतरा 20 टा टेस्ट और 20 टा जोटा ओपीएससी पचाची, ओपीएससी रो रियल क्वेश्चन आंसर हला 20 सेट. ता सहित हम प्रैक्टिस करिया 24 सेट. So it is almost 44 tests. So we can expect a good score after practicing all of this. Concept आमे एठी केवल कथा बने, आमे कथा बता को केमते आमे अप्लाई करिवा. And the thing is that हमकु केमती अधिक रु अधिक स्कोर करिवार अछि. That is our main aim of this lecture. ए जो लेक्चर सीरीज चलची तारो गोटे सोल एम इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. हमको स्कोर अधिक करिया अछि, सिलेक्शन नेकी जिवार अछि. दैट इज आवर ओनली एम. बाकी
जहाँ भी आम करवा दैट विल इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट जोटा कि आमर मार्क को बूस्ट करियो केमती केमती एनहांस करियो तापर आम कथाबार्ता करिया एंड ऑल्सो विल डिस्कस द कोर कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन सबुडा आम केवल मार्क एनहांस करिया विषय एक कथा स्टार्ट रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन हेल्थ डाइटरी फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स गोटेला सॉल्युबल फाइबर गोटेला इनसॉल्युबल फाइबर soluble fiber are those which dissolve in water and helps regulate blood sugar and cholesterol levels आम लास्ट क्लास में कथा हेतिले if you are talking about apple कथा अछि ना keep कोन apple and apple a day keeps the doctor away कहीं कहला apple रो दी प्रकार फाइबर अछि तर आउटर लेयर होची इनसॉल्युबल फाइबर जोटा कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह को प्रिवेंट करिवो बाउल मूवमेंट को ईज करेबो आ जो सॉल्युबल फाइबर रहिला दैट विल बाइंड विथ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड जेतल से ब्लड रे फ्लो करिवो हमरो आर्टरी रे जो कोलेस्ट्रॉल थिवो ता सहित से बाइंड हेकी ताको से बॉडी रु एक्सक्रिएट कर दबो एंड दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़िला ताको हमको कंट्रोल करिया पड़िबो अदरवाइज इट विल लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज कथा दैट इज योर हार्ट डिजीज कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छी राइट सो एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल फाइबर आर एप्पल ऑरेंज गुआवा एप्पल ऑरेंज गुआवा एटा फ्रूट्स रे वेजिटेबल कौन कौन हो पार लाइक कैरट्स स्वीट पोटैटो बीटरूट देन सीरियल से आसो ओट्स बार्ले फ्लैक्स सीड्स एते सब जिनस आमको कौन मिलची आमको मिलची सॉल्युबल फाइबर talking about the insoluble fiber that aids in digestion and prevents constipation example kono example la banana टिके कंचा थी ओके स्लाइटली ग्रीन देन योर ग्रेप्स एप्पल विथ स्किन जदि एप्पल रो स्किन आम पील करदे भितरटा हम सॉल्युबल फाइबर आ जदि आम एप्पल रो स्किन कथा कहबा दैट इज योर इनसॉल्युबल फाइबर वेजिटेबल कौन कौन आसो कॉलीफ्लावर ग्रीन बीन्स स्पिनाच cabbage and if you talk about the cereals whole grain and example also includes nuts and seeds दी प्रकार जदि आम देखिले दी प्रकार फाइबर अच्छी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर फाइन नाउ क्वेश्चन कौन पचार रोल ऑफ डाइटरी फाइबर आमको तार फंक्शन विषय कथा हबार अच्छी तार रोल विषय कथा हबार अच्छी हाउ इट एड्स द ह्यूमन बॉडी और हाउ इट हेल्प्स keeps us healthy. The first function or first role of dietary fiber is promotes digestive health. आम कथा ले जोटा insoluble अच्छी that will provide bulks to the stool कारण डाइजेस्ट हम ना आम कार्बोहाइड्रेट खाइले if we take carbohydrate it will digest ताको ब्रेकडाउन हो आम फैट खाइले से भी ब्रेकडाउन हम आम जदि प्रोटीन खाऊँ दैट इज ऑल्सो ब्रेकडाउन विटामिन्स मिनरल्स ये सब गुड़ा बॉडी आब्जर्व कर आउटा ब्रेकडाउन होगी तुम स्टूल्स क्रिएट हम बट से स्टूल को मूवमेंट करने यू नीड सर्टन अमाउंट ऑफ फाइबर जोटा कि इनडाइजेस्टेबल थी जोटा कि इनडाइजेस्टेबल थी डाइजेस्ट हो न सो दैट इट विल प्रोवाइड बल्क टू द स्टूल जदि बल्क न रही कौन हम ताले इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन सो जदि गुड अमाउंट रो इनसॉल्युबल फाइबर इज प्रेजेंट इट विल प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन देन स्मूथ बाउल मूवमेंट को स्मूथ करेबो रिड्यूसेस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रो जहाँ प्रोब्लेम थी ताकू भी सी कम करेबो दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ फाइबर जमी मुझे लिखी तुम एग्जाम ले बिल्कुल सिमिलर वे लिखिपर डोंट थिंक एत जगह रहा कि ना तुमको 250 वर्ड लिखार अच्छे दैट टू इन
3 pages तो each page रे तुम्हें 80 वर्ड लिखले भी दैट इज एनफ 80 वर्ड्स कॉपी तुमको कंप्लीट भी करार अच्छी ना ओपीएससी एत भी आग को पलैनी जे तुम से बस गणिदेव ना ताकू 3 पेज भी देखार अच्छी ओपीएससी एबे भी सही पुराना फर्मुला चलती यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर पेज तो 80 पेज लिखिकी सॉरी 80 वर्ड ईच पेज लिखिकी तुम जब भी कंप्लीट कर दैट इज नो हार्ड तो यू कैन यूज डायग्राम एक्सटेंसिवली जो जिते डायग्राम तुम कर तो इट इज ए प्रैक्टिस कि 20 मार्क तो मिनिमम तुम 2टा डायग्राम करने चेष्टा कर 15 मार्क रे गोटे कि 2टा ना 20 मार्क तुम कंप्लीट हेनी 4 पेजेस केमती तुम कंप्लीट कर लिखिकी नॉट पॉसिबल तो डायग्राम करिवो डायग्राम कले 2टा जिन हम गोटे तो तुम टाइम बंचो तुम कॉपी बहुत भल देखा एंड सेकेंडली इट विल हेल्प द एग्जामिनर बहुत सारा स्ट्रेस नहीं कि से तुम आंसर पढ़ा बिल्कुल भी चाहिए से चाहिए कि इजिली जिनसा हो जब मुझे लिखुची आउ जब यहाँ मुझे बॉक्स कर रखुची के इजी हो देख रोल पढ़ले प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ गोटे पॉइंट होगला रेगुलेट ब्लड सुगर माने सेकेंड पॉइंट होगला थर्ड पॉइंट कौन आसो लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ 3 नंबर होगला एड्स इन वेट मैनेजमेंट बस 4टा पॉइंट पढ़ले जी मार्क देवार अच्छे देले चलले से जब बस खोजे कौट लिखाई दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम टू यू एबे तो पूरा प्लेन पेपर रे आमे आंसर लिखछन ना जो आंसर लिखला परे आमे जदी बॉक्स से ताको रखिबा जोटा हेडिंग हो ताको बॉक्स लकी करिकी रखिबा इट विल फेच यू गुड मार्क तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग ओनली केमी तुम ताको कंप्लीट करिवो एंड एमती भी कंप्लीट करिया नहीं कि बेकार आंसर लिखिकी टू द पॉइंट आंसर लिखिकी वर्ड लिमिट भितर पेज कंप्लीट करिया अछि वर्ड लिमिट ता आगुरु हला कंटेंट रो क्वालिटी वर्ड लिमिट आउ कंप्लीट द आंसर शीट यहीटा 3टा हला तुमर मेन जिनस जोटा तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रे हो जब तुम यहाँ कर इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू ए गुड स्कोर 24 टेस्ट तुम लिखिकी देख 24 टेस्ट तुम लिखिकी देख एंड कंपेयर योर सेल्फ जो दिन तुम 24 टेस्ट लिखा स्टार्ट कर टेस्ट 1 रू नहीं टेस्ट 24 भितर यू विल फाइंड आउट हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट जो तुम टेस्ट लिखनी देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हार्म यू 1 ईयर 465 था 865 था that doesn't create any sense unless you are writing or unless you are practice the टेस्ट लिखुना माने तुम निजक ही हार्म कर जी पढ़ुच से टेस्ट लिख आउ के भावियोनी मुझे कंप्लीट करी सिलेबस आउ टेस्ट लिखी सेटा केबे हेनी कि हेनी आ जो मैंने सिलेक्शन नहीं जाऊँच भी पचार से भी सिलेबस कंप्लीट कर ना केबे भी ठीक पिला भाविए कि आई विल कंप्लीट द सिलेबस एंड देन आई विल मूव टू टेस्ट एटा केबे हेनी केबे भी हेनी एटा तुम 5 वर्ष नहीं जाओ तापर भी तुम सिलेबस कंप्लीट हो बिकॉज ईच ईयर सिलेबस इज चेंजिंग कोर्स सीना माने सेम अच्छी बट केते जिनस आमर प्रति वर्ष आड हो जाउची आमे जानना ओपीएससी कोड क्वेश्चन पचार मे बी करेन्ट रू पचार मे बी पछरू पचार कोड भी से पचारि पारे सो अनलेस विल राइट वी कैंट इम्प्रूव आमे लेक्चर देखिकी वी कैन इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट आमे कॉन्सेप्ट बुझी पारिबा जहाँ किसी साइंटिफिक टर्म अच्छी कि किसी कोर कॉन्सेप्ट अच्छी ताको हम बुझी जावा बट केमिति आमर केमिति इम्प्रूवमेंट हम एज ए स्टूडेंट मु केमिति मैक्सिमम बेनिफिट नेबी ए जिनस एंड टू डू सो यू नीड टू प्रैक्टिस मॉक बोथ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट लिख सो दैट यू विल नो कि तुम्हें कौटी अच्छ तुमको केते इम्प्रूवमेंट करिया पड़िबो एंड ऑल्सो वी विल गिव यू द फीडबैक दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू किछि पिला तुमको कहबे कि एटा करनी सेटा करनी एमिति हे जिवो सेमिति हे जिवो बट जो पिला कहूची से कोन सिलेक्शन नै छि कि
जो पिला तुमको कौच एमती करनी सेमती करनी से पिला सिलेक्शन नहीं कि जो पिला सिलेक्शन नहीं ताको पचार सी के टेस्ट से लिखी एंड आई एम नॉट सेइंग कि टेस्ट लिखले तुम सिलेक्शन नहीं जीवो बट टेस्ट लिखले तुम सिलेक्शन चांसेस आर बढ़िबो और जदि न लिखुछ चांसेस आर वेरी लेस जदि भी तुम पाइबो मे बी द रैंक बहुत माने कौन बहुत ही कम रैंक रे पाइबो तुमर जोटा सर्विस प्रिफरेंस थी तुम से भी पहुँच पारबनी समस्त थाए ना मत ओएस हबार अच्छी ओपीएस हबार अच्छी ओएफएस हबार अच्छी ग्रुप ए सर्विस कि ग्रुप बी रो प्रिफरेंस अच्छी ओआरएस मे भी तुम रैंक जब बहुत कमीगला ताल तुम एमती गोटे सर्विस पाइब जोटा तुम प्रिफरेंस माने यू विल जॉइन ओके सैलरी विल बी सेम ग्रुप बी रे तो समस्त सैलरी सेम बट तुमर जो एम थिला यू मे नॉट अचीव दैट एबे भी टाइम अच्छी यू हैव ऑलमोस्ट 90 डेज इन हैंड बहुत लेट न करी प्रैक्टिस कर जो मैंने आम टेस्ट सीरीज नहीं वी विल स्टार्ट द टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आम गोटे सेक्शन जमी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 आम जो पढ़ुचु दैट विल कंप्लीट एंड आफ्टर दैट विल टेक टेस्ट 1 एटा सेक्शनल टेस्ट हम सिमिलरली चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 सरला टेस्ट 2 हम दी ऑल आर सेक्शनल एमती सरला फिर आम जा एटा पेपर 1 सेक्शन ए सिमिलरली आम पेपर 1 रो सेक्शन बी को भी जा सेमती 3 दिन नहीं आम टेस्ट करिया आम टोटाल 12टा टेस्ट रखी सेक्शनल सो दैट कि तुम जहाँ पढ़ुच तुम मुंडरे पूरा प्रिंट हो एग्जाम बेलू तुम टेंशन रे आउ नथिबो जस्ट गिव अस 4 आवर नाउअडेज नॉट नाउअडेज गिव अस 4 आवर डेली ओके 4 आवर्स डेली प्रतिदिन 4 घंटा लेखा आमको दियो यू जस्ट वाच 3 आवर लेक्चर 1 आवर प्रैक्टिस एवं जी आम पढ़ाऊँ 3 घंटा लेक्चर देख लेक्चर देखला गोटे घंटा जहाँ आम पढ़ेले ताको आउ थे निजे रीड कर 3 घंटा लेक्चर देख लो जस्ट टेक 30 मिनिट्स ब्रेक 30 मिनिट्स ब्रेक नेला आसिक 1 आवर आम जहाँ पढ़ेलु ताको आउ थे पढ़ ताको मन रखा चेष्टा कर गोटे निजर गोटे देख पूरा फुल नोट्स बनाया दरकार नहीं जदि आम पढ़ुं रोल ऑफ डाइटरी फाइबर जस्ट राइट दिस टू थिंग्स सल्युबल फाइबर इनसल्युबल फाइबर किसी एग्जांपल एंड रोल रोल 4टा पॉइंट लिखले एनफ से तुमको प्रैक्टिस बहुत हेल्प कर जो तुम फाइनल एग्जाम हॉल को जीव दैट विल हेल्प यू इमेंसली कि टेस्ट अच्छी काली आज जब आम से प्रैक्टिस करवा से भी बहुत आमको हेल्प मिल ओके सो फास्ट देखले प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ सेकेंड रेगुलेट ब्लड सुगर फाइबर अब्जॉर्ब्स ग्लूकोज आमर कौन हो ब्लड सुगर माने कौन हो स्पाइक इन ग्लूकोज जदि ग्लूकोज लेवल आम बॉडी में बढ़ीगला आमको अधिक इंसुलिन दरकार टू कंट्रोल इट तो फाइबर जदि आम फूड रे थिबो दैट विल अब्जॉर्ब ग्लूकोज प्रिवेंट स्पाइक इन ब्लड सुगर एग्जांपल जानिଛ तुम एप्पल हो गला ऑरेंज हो गला गुआवा हो गला कैरट्स हो गला स्वीट पोटैटो हो गला एटी आम कौन कर ऑलमोस्ट आम लिखी द एग्जांपल ऑफ ये कौन लिखते हैं एग्जांपल ऑफ सल्युबल फाइबर देखिए तुम कौ जगह सल्युबल दरकार ये कौन दरकार ऊपरटा दरकार डाइजेस्टिव हेल्थ में इनसल्युबल फाइबर से मन रखियो टे माने मन कौन रखियो तुम देखले तुम जापर कौटी कहार एग्जांपल आम लिखार अच्छी नेक्स्ट इज लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ जमी मुझे लास्ट क्लास में फाइबर बाइंड्स विथ कोलेस्ट्रॉल इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लोअर एलडीएल जोटा कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहते एंड रिड्यूसेस कार्डियोवास्कुलर डिजीज फाइबर कौन कर तुम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रे कोलेस्ट्रॉल सहित बाइंड हो बाइंड होगा एक्सक्रिएट करदे बॉडी से बाहर करदे एलडीएल जोटा आम अच्छी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल सेटा को कंट्रोल करिवो आउ सीबीडी रो रिस्क नॉट सीबीडी द रिस्क ऑफ सीबीडी विल बी रिड्यूस्ड एग्जांपल कौन हो गला आवाकाडो एप्पल स्पिनाच ब्रोकोली ओट्स लेंटिल्स बार्ले यही एग्जांपल गुड़ा जो आमर चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सरी जीव ताल तुमको एग्जांपल मन रखा पड़ोनी तुम बुझी जाइए कि कौ एग्जांपल कौटी आमको लिखार अच्छी एंड लास्ट इज एड्स इन वेट मैनेजमेंट फाइबर रे कौन अच्छी फाइबर रे तो माने कैलोरी ही नहीं ना बट इट प्रोवाइड सैटिटी माने पेट भरी जीव तुम गोटे लेट सपोज यू आर टेकिंग ककम्बर ठीक ककम्बर रे टोटाल 100 ग्राम रे तुम 50 किलो कैलोरी भी नहीं आउरी कम अच्छी तुम बहुत सारा फाइबर अच्छी तुम खाइल
ठीक अच्छे तुमको एनर्जी मिले के 50 किलो कैलोरी तुम पेट भी पूरी गला बट जदि आम 50 ग्राम खाऊँ गोटे डिनर रे लेट सपोज आम 50 ग्राम माने 50 किलो कैलोरी खाइले तो आम डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट 400 किलो कैलोरी हो आम टोटाल के टोटाल जब आम 2100 किलो कैलोरी नवा 2100 किलो कैलोरी लेट सपोज मॉर्निंग रे आम खाइले 450 किलो कैलोरी लंच रे अधिक खाइले लेट 600 किलो कैलोरी कि 800 धर 800 खाइल ठीक रात भी तुमको आहरी 900 तुम डेफिशिएंसी रहा स्नैक्स स्नैक्स अच्छी तो स्नैक्स मिसे दिए 400 किलो कैलोरी के 1600 होगा ये तुम खाइल 50 आउ के रहा आउ 450 किलो कैलोरी रहा जब तुम 450 किलो कैलोरी रबियसली डेफिशिएंसी जब रही तुम फैट को बर्न कर सो इट विल एड्स इन वेट मैनेजमेंट फाइबर रे किसी भी एनर्जी न थाए बट से तुम पेट फुल करदेव आम थाए ना साइकोलोजिकल भोक कौन केवल माने फिजियोलॉजिकल लगे साइकोलोजिकल भी लगे ना मन पड़ो यार मुझे सकाल किसी खाई भोक लगे स्टार्ट हो भोक ना तुम फिल कर मन पड़ो अच्छा मुझे खाई 5 घंटा है 6 घंटा है तो भोक लगे स्टार्ट हो जाए तो से जो साइकोलोजिकल हंगर अच्छी दैट कैन बी ऑल्सो मैनेज्ड थ्रू दिस फाइबर जो फाइबर रिच अच्छी तुम खाइब कैलोरी कम रैंड इट विल हेल्प इन वेट मैनेजमेंट प्रोवाइड सार्टेटी माने जोटा गोटे कौन कह तुमको माने यू विल लाइक कि मोर पेट फुल अच्छी ठीक भोक लगुन मत मो पेट जगह नहीं रिड्यूसिंग कैलोरी इनटेक एंड प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग एमती कई लोक तुम देखी न फल खाई खाई फ्रुट्स खाई खाई बहुत मोटा सेमती नथिबे लोक बट जे तुम कंज्यूम कर हाईली प्रोटीन फूड्स और फैट ताहले वेट गेन होवार बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छी बट फ्रुट्स और वेजिटेबल कौन अच्छी फ्रुट्स और वेजिटेबल बहुत सारा कम कैलोरी अच्छी ना दैट विल हेल्प इन वेट मैनेजमेंट आहरी अच्छी पॉइंट रिड्यूसेस कैंसर रिस्क केमती रिस्क ऑफ कोलेट्रल कैंसर बाय प्रोमोटिंग हेल्दी बाउल मूवमेंट रिड्यूसिंग टॉक्सिक अक्युमुलेशन जोटा आमर डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छी ओके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लास्ट आड़ अच्छी कोलेट्रल ओके सॉरी नॉट कोलेक्ट्रल कोलोरेक्टल ओके जोटी की बैक्टीरिया वगैरह था गुड बैक्टीरिया दैट विल डाइजेस्ट द फूड व्हिच इज नॉट ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस किसी फूड अच्छी जोटा ब्रोकन डाउन नहीं तो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट कोलोरेक्टल एरिया से ब्रोक डाउन करी तुम डाइजेस्ट कर दिखती आईटी कौन हुए टॉक्सिक अक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाए जदि आम गुड अमाउंट रो फाइबर नौ दैट विल आल्सो क्लीन दैट ट्रैक्ट देन डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी प्रिवेंट्स स्ट्रेन इन बाउल मूवमेंट एड्स इन टॉक्सिक रिमूवल टॉक्सिन रिमूवल करिवो आउ बाउल मूवमेंट रे स्ट्रेन पकेबोनी कारण इट प्रोवाइड बल्क जदि बल्क रहिबो ताले बाउल मूवमेंट भी इजीली हो बाउल मूवमेंट तुम खाइलो तुम बॉडी रे जो फूडटा मूवमेंट करिवो ना स्टोमक को जीव स्टोमक रु कौन इंटेस्टाइन को पशिव स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो टोटल मूवमेंट अच्छी दैट इज योर बाउल मूवमेंट सपोर्ट्स गट्स माइक्रोबायोटा act as probiotic and nourishes beneficial gut bacteria माइक्रोबायोटा को हेल्प करिवो नरिश करिवो so that our digestive system will remain healthy. A diet rich in fiber from fruits, vegetables, whole grains, and legumes is essential for good health. Regular consumption helps prevent lifestyle disease and support overall well-being. एति सब जिनस तुमको लिखार अच्छे फाइन एति सब जिनस लिखिले तुमको गोटे भल मार्क मिल फाइन भल मार्क तुमको मिल यहाँ प्रैक्टिस द्वारा ही आसो आमको साइंटिफिक टर्म यूज करा पड़ो बारंबार मुझे कहूँ दिस होम साइंस ऑप्शनल इज योर पीजी लेवल एटा यूजी लेवल बिल्कुल नो अंडर ग्रेजुएट नो पीजी लेवल दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट आंसर इन पीजी लेवल तो पीजी लेवल जो तुम आंसर लिखुच तुमको जेनेरिक आंसर रे मार्क मिलबनी जेनेरिक आंसर विल नॉट बी रिवार्डेड बिल्कुल जेनेरिक आंसर लिखबनी जीएस जेनेरिक आंसर दरकार ऑप्शनल रे जेनेरिक आंसर विल नॉट गिव यू और विल नॉट हेल्प यू टू गेट ए गुड स्कोर ऑप्शनल रे जदि भल स्कोर आम रखिबानी ताले देयर आर चांसेस कि आम बिल्कुल लिस्ट ही बाहर जा रैंक कथा भूली जाओ मिनिमम गोटे 260 270 280 शुड बी आवर एम 300 स्कोर जदि करिया
तो बहुत बड़ कथा बट 2024 रे जमती मार्किंग है सो इट इज वेरी हार्ड टू स्कोर 300 से देवे ही नहीं तुम जिते भल लिखले तो कौन करिया जी से 300 देवे ही नहीं ताले आम कौन कर आमको हेल्प माने आमको कौन करिया पड़े आमको ट्राई करिया पड़ो समथिंग अराउंड 260 270 भी बहुत भल स्कोर 135 135 इच ना 145 125 इज ए गुड स्कोर चेष्टा करिया से आम रखा सो दैट वी विल एनश्योर कि वी विल गेट ए गुड रैंक आ जिते शीघ्र ओपीएससी साइकिल बाहर जाव से शीघ्र तुम भल दिस साइकिल विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इफ यू स्टे लॉन्गर हियर जिते समय ये तुम टाइम लगेब यू कैंट इवन एंजॉय एनीथिंग इन योर लाइफ सो जिते शीघ्र साइकिल बाहर से शीघ्र तुम भल इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस वर्षे 2 वर्ष है प्रिपरेशन कर जस्ट क्लियर द प्री क्लियर द मेन्स रैंक नहीं पड़े जाओ लिव योर लाइफ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन sources and deficiency of calcium. I agree कि it will help you or it will make you learn many more things but तार भी तो गोटे टाइम अच्छी ना तुम ग्रेजुएशन कल पोस्ट ग्रेजुएशन कल ठीक तापर भी तुमको प्रिपरेशन करिया अछि केते वर्ष प्रिपरेशन करियो प्रिपरेशन केते समय करियो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष बिकज तुम्हें जानी ना केते वर्ष पर्यंत तुम प्रिपरेशन चलो इफ यू आर नॉट माने आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट सीरियस तुम सीरियस अच्छ बट जो तुम राइट गाइडेंस नहीं तुम केते वर्ष प्रिपेयर करियो तुम भी जानना तुमको लगुत हो 15 मार्क रहीगला 10 मार्क रहीगला 7 मार्क रहीगला बट से केबे हम फील करिया से 7 मार्क कि 10 मार्क आम 10,000 टका बंचेबा ते सीरीज न देकी 8,000 टका बंचेबा ऑप्शनल न नहीं फिर ये आम आ वर्ष खत्म करवा तुम चिंता कल 18,000 टका देले तुम गोटे वर्ष तुम लाइफ मिल जाओ कि 18,000 टका तुमको किए जन देले तुम गोटे वर्ष लाइफ तुम देपर कि बट तुम न देकी तुम टेस्ट न लिखी गोटे वर्ष तुम लाइफ खराब कर दौच गोटे वर्ष लाइफ तुम खराब हो जाए आई एम नॉट सेइंग कि आमर जॉइन कर जो जॉइन कर जो तुम बेनिफिट मिलूँ यू जस्ट डू इट बट डू इट पैसा लगाओ कारण तुमको इवन 2 लाख रुपीज छाड़ 20 लाख रुपीज देले भी तुमको गोटे वर्ष तुमको टाइम दे पारे बट तुम ये 10,000 20,000 25,000 तुम तुम गोटे गोटे वर्ष खराब कर दौच तुमको लगुच होनी ना फिर आर वर्ष को तुम फिर 8 मार्क रहीगल 10 मार्क रहीगल बेटर ना टेक एंड हेल्प कौन है जो देह खराब हो डॉक्टर पाक जाऊँ ना फीस दौन ना दौना फीस दौरान फीस ना ट्रिटमेंट हो पारनि तो सहीटा इंपोर्टेंट एटा इंपोर्टेंट नुहे तुम लाइफ को जे माने बदल देव दैट इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर यू आम माने हिट एंड ट्रायल बेसिस जाइए गोटे वर्ष कले है 2 वर्ष कले है 3 वर्ष कले है 4 वर्ष कले है 5 वर्ष कले है आम बर्तमान अन्य मानक कहते तू भी हेल्प नहीं तू भी टेस्ट सीरीज देनी बेकार टेस्ट सीरीज किसी बेकार नुहे सब यूजफुल इफ यू नो हाउ टू यूज इट तुम यदि जना ना स्मार्टफोन नो यूज तुम स्मार्टफोन नहीं कले भी केवल कॉल ही कर बिकज तुम जानना ना तार हेल्प कौन अच्छी तुम जन कहीदे कि यार किसी हेल्प नहीं तुम भाव किसी हेल्प नहीं तुम हाथ में अच्छी बट यू आर नॉट यूजिंग इट केते वर्ष तुम दब ठीक केते वर्ष दब जहाँ होगला आउ 1 ईयर मैक्स टू मैक्स 2 ईयर ता भितर कंप्लीट करके पड़े जाओ 4 वर्ष दे सारे 5 वर्ष दे सारे 6 वर्ष दे सारे आउ जब अटेम्प्ट अच्छी गोटे वर्ष 2 वर्ष मैक्स टू मैक्स ए वर्ष यदि प्रिलिम्स होची ए वर्ष रैंक नहीं जाओ ए वर्ष यदि प्रिलिम्स होनी कौन भी कारणवश बिकज दिस टाइम प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग कार हम कार हेनी बिल्कुल कहया मुश्किल जदि होची देन यू जस्ट क्लियर इट एंड गो जदि न होची आर वर्ष में प्रिपेयर हो जी मुझे शुणी ऑलमोस्ट गोटे तुम 170 प्लस ग्रुप ए पोस्ट आस ग्रुप ए 170 प्लस मे बी ओएस बोधे अधिक आसो अराउंड माने मुझे जी शुणी सो दैट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू डोंट मिस दैट एबेटू प्रिपेयर हो आर वर्ष एग्जाम दियो जदि एथर प्रिलिम्स होनी नहीं पड़े जाओ जदि एथर हो जॉब बाहर करके पड़े जाओ लिव ए लाइफ केते दिन गैम्बलिंग एमती पड़ी रहिबो
ओके जोटी हेल्प दरकार यू टेक हेल्प बापा माँ को पैसा दरकार यू कैन आस्क फॉर खराब लगे नो डाउट 4 वर्ष 5 वर्ष है खराब लगे ह्यूमन नेचर यहाँ बट आम पाखे अल्टीमेट एम माने अल्टीमेट एम अच्छी आमको बनवार अच्छी आगे हेल्प दरकार तो लाज कले कौन हम भोक भी लगुच ना भोक लगुच मुझे घरे कह मत खाया दियो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कैल्शियम आम मिनरल स्टार्ट करिया कैल्शियम भी अच्छी आयरन भी अच्छी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस मिनरल्स जोटा एग्जाम रे ऑलरेडी पचारची एंड जोटा पचारि परियो नेक्स्ट दैट विल आल्सो विल कवर कैल्शियम इज वेरी इंपोर्टेंट because it have multiple functions in our body. It is required for various physiological functions in human body, mostly abundant minerals primarily stored in bone and teeth. Bone और teeth हमारे calcium रे form है ना. We will talk about the sources. Dairy product is a rich source. Milk, then cheese, yogurt. तमें याकू कौन कर परिबो तमें याकू बिल्कुल प्लांट आउ एनिमल हिसाब रे भी कर परिबो किसी असुविधा नहीं प्लांट सोर्स एनिमल सोर्स से भी तुम कर परिबो बट जेहेतु आमको डिस्टिंक्टली लिखार था तो आम अलग अलग डिवाइड कर लिखिछु डेयरी प्रोडक्ट तुम कौन आसला मिल्क आसला चीज योगर्ट दही लिफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच एंड ब्रोकोली नट्स और सीड्स से आसला आलमंड सीसम सीड्स लेग्यूम से आसला सोयाबीन्स लेंटिल्स सी फूड रे सालमन फिश विथ बोन्स एंड नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम रो बहुत सारा फंक्शन अच्छे फास्ट फंक्शन इज बोन आउ टीथ हेल्थ जो पिलार ग्रोथ हो तार ग्रोथ को सपोर्ट करने बहुत सारा अमाउंट रो कैल्शियम दरकार तार बोन भी फॉर्मेशन हम तार टीथ भी फॉर्मेशन हम तार कौन ओस्टियोपोरोसिस वगैरह ताको स्टॉप करिवो ओस्टियोमालेसिया अच्छी ताको भी हमको बंद करे अच्छी सो फर्स्ट इज बोन एंड टीथ हेल्थ प्रिवेंट्स ओस्टियोपोरोसिस सेकंड ला मसल फंक्शन रेगुलेट मसल कंट्राक्शन एंड हार्ट फंक्शन हार्ट भी हमारे गोटे मसल ना जो मसलटा मुवमेंट करुच्ची तुम ब्लड को पंप करुच्ची तो तार फंक्शन आ मसल कंट्राक्शन होगापी आमको कैल्शियम दरकार कैल्शियम देन नर्व ट्रांसमिशन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स भितर नर्व जो अच्छे आमर जिते सारा नर्व्स अच्छी ता भितर कम्युनिकेशन करने भी तुमको कैल्शियम रो आवश्यकता अच्छी एंजाइम एक्टिवेशन सपोर्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एंजाइम फंक्शंस देखो ये मुझे बिल्कुल साइंटिफिक टर्म जाकि एग्जैक्ट एंजाइम ना लिखुनी बिकज इट विल बिकम मोर मेडिकल ओरिएंटेड ठीक होम साइंस एते आमको डिटेल्स को जाकि तार केमिकल कंपोजिशन तार एग्जैक्ट ना दरकार नहीं जो जो दरकार मुझे सीट कहि ये आम लिखिपर एंजाइम एक्टिवेशन इट सपोर्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एंजाइम फंक्शंस then hormone secretion involved in release of essential hormones last is blood clotting crucial role in blood coagulation जो blood माने गोटे जगह आमर कट हो जाऊँगी से ब्लड बाहर तो ताको ब्लड को कोआगुलेट करिया पड़ियो फास्ट से गोटे स्किन भाया टेम्पररी स्किन तैयारी ब्लडटा बंद हम से कोआगुलेशन आमको कैल्शियम दरकार फाइन फास्ट है बोन एंड टीथ हेल्थ मसल फंक्शन हार्ट फंक्शन नर्व ट्रांसमिशन एंजाइम एक्टिवेशन हार्मोन सिक्रेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग तापर आम देखा रिक्वायरमेंट इनफैंट रे केते रिक्वायरमेंट अच्छी 200 नहीं कि 600 मिलीग्राम 200 नहीं कि 600 मिलीग्राम पर डे डेली एटा आईसीएमआर डेली दिन को केते दरकार तुमको इनफैंट मुझे कौन कही 0 नहीं कि 1 ईयर 0 नहीं कि 1 ईयर भीतर के दरकार 200 नहीं कि 600 मिलीग्राम पर डे चिल्ड्रेन के दरकार चिल्ड्रेन किए 1 नहीं कि 5 ईयर पर्यंत ताको दरकार 700 रु 1000 मिलीग्राम पर डे इनफैंट
200 to 600 milligram per day. Talking about children, it will range between 700 to 1000 milligram per day. Adolescents, that means 10 to 17 18 पर्यंत 1300 milligram. Adult 1000 milligram. देखो adolescence पर एटी कमुच कारण ऑलमोस्ट जहाँ भी ग्रोथ हवा कथा मसल जहाँ भी आमर हाइट बढ़िया कथा जहाँ भी टीथ वगैरह रिपेयर हवा कथा दैट इज डन बाय दिस एडोलसेंस एज. लास्ट को वाइज टीथ है ना, विजडम सर नॉट वाइज विजडम टीथ. एवरीथिंग कैन बी डन बाय दैट एडोलसेंस एज. एडल्ट रहा 1000 मिलीग्राम एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर दरकार 1200 रु 1300 मिलीग्राम. गोटे चार्ट कर आउ लिख इनफांट के 200 टू 600, चिल्ड्रेन 700 टू 1000, एडोलसेंस 1300, एडल्ट 1000 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर 1200 टू 1300 मिलीग्राम. ये क्वेश्चनटा यहाँ पचार नाला बट एडिशनली आई हैव रिटन बिकज जो आम पढ़ुं कैल्शियम आम पूरा कवर करिया. आम जानना नेक्स्ट टाइम से पचार दब आधे गोटे लिखिदेव कि द रिक्वायरमेंट ओके एज फॉर आईसीएमआर एति से ऐड कर आम क्वेश्चन 5 मार्क करदेवा बिकज आम टेबलटा ही जान ना. सो जो आम प्रिपेयर होती वी शुड प्रिपेयर फ्रॉम ऑल एंगल, सब एंगल हमको प्रिपेयर होगा पड़ो. एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विथ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम? फर्स्ट ला ओस्टियोपोरोसिस, वीक एंड ब्रिटल बोन्स. बहुत वीक हम बोन आउ बहुत जल्दी भांगी जाए. वीक एंड ब्रिटल. रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, बोन डिफॉर्मिटीज मीन बोन बंका हो जाए ना, बोन डिफॉर्मिटीज ड्यू टू इनएडेक्वेट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. एटा माल अब्जॉर्प्शन केस, माल अब्जॉर्प्शन केस. जदि बॉडी किसी प्रोब्लेम होगा माल अब्जॉर्प्शन हो मैंने से कैल्शियम को अब्जॉर्ब ही कर जो केस रे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करी से जगह मिल्क इज द बेटर सोर्स. मिल्क रे एमती सारा बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा से तुमको कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करने बहुत हेल्प करे. देन ओस्टियोमालेसिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स लीडिंग टू पेन एंड वीकनेस. एटा तो छोट ही पढ़ी ना. ओस्टियोपोरोसिस होगला, ओस्टियोमालेसिया होगला, रिकेट होगला. तापर कौन अच्छी मसल क्रैम्प एंड वीकनेस. जेहेतु ये आम देखले कि मसल कंट्राक्शन रे आमको कैल्शियम दरकार एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम दैट विल लीड टू मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस. नमनेस एंड टिंगलिंग, न्यूरोलॉजिकल इश्यू. तुम देखियो कि बेले बेले हाथर जो टिप अच्छी कि गोड़ फिट्र जो टिप अच्छी टिप पाखे माने सॉफ्ट पेन हम, टिंगलिंग कहते माने बहुत धीरे धीरे पेन हो. आ नमनेस मैंने तो जान कि यू कैन फिल जमी हुए बेले बेले आम गोड़ एमती चकामटी पकई बसीगले आम उठती आमको लगे कि आम गोड़ ना. नर्व्स जो दाबी जाइए ना ये ब्लड फ्लो हो जब ब्लड फ्लो हो उठला पर आम लगे कि आम गोड़ आम मैंने फिल कर दैट इज द नमनेस. So if there is calcium deficiency, this numbness and tingling will also appear. That is neurological issue. And delayed blood clotting. Blood गोटे जगह तुम कट हो गला ब्लडटा 1 minute 30 सेकेंड भीतर बंद हो कथा बिकज देयर इज एब्सेंस ऑफ कैल्शियम. तो ब्लड क्लटिंग से जगह हबार डिले हम 1 minute 2 minute पर्यंत चलो तुम बांधिक रख कि पाउडर वगैरह पकेब बैंडेड वगैरह लगे जाए ब्लड क्लटिंग हम. So these are 6 diseases or 6 problems that is associated with the deficiency of calcium. Calcium deficiency ले ये छोटा problem होगा. Calcium is crucial for bone health and muscle function as well as overall well-being. सब बोल तुम लिखियो overall well-being, overall well-being तुम सब बोल लिखियो. Okay, overall well-being, overall केवल माने तार फंक्शन लिखी. ओके क्रुशियल फॉर बोन हेल्थ आम लिखिले, मसल फंक्शन लिखिले एंड ओवरऑल वेलबींग एटा तुम ऐड करियो सब दिस पॉइंट. ए बैलेंस्ड डाइट विथ एडेक्वेट कैल्शियम इनटेक हेल्प्स प्रिवेंट डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज और डिसऑर्डर्स. बुझी पालो. बैलेंस्ड डाइट विथ एडेक्वेट कैल्शियम इनटेक हेल्प्स प्रिवेंट डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड हेल्थ डिसऑर्डर. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अनुसार थिला डेफिशिएंसी पचार, सोर्स पचार, फंक्शन पचार, केमी आम कनक्लूड कले. फाइन.
We'll see the last question of this session. सोर्स से कौन करती ओपीएससी केमी क्वेश्चन पचारे बिल्कुल तो सिलेबस गोटे पार्ट नहीं काटिकी नहीं डायरेक्ट पेस्ट करदेव देख सोर्स भी अच्छी फंक्शन अच्छी रिक्वायरमेंट अच्छी डेफिशिएंसी अच्छी आयरन से सब पचारिदेला मैंने से कौन करती कॉपी पेस्ट करती डायरेक्ट कट मारे से थी मे भी फाइल आम पाखे जो ओपीएससी जहाँ देटा तो इमेजटा देती पीडीएफ फॉर्मेट माने पीडीएफ फॉर्मेट इमेज पकई तो काम करनी आम कॉपी पेस्ट कर पारे बट आई होप कि पाखे थी एटलिस्ट कि वर्ड फॉर्मेट थी डायरेक्ट कॉपी करेंगे ये पेस्ट करेंगे सब पचारिदेवे 15 मार्क क्वेश्चन रे सब पचारे से तो चार्टा जिन 15 मार्क मैंने तुमको गोटे गोटे 3-3 मार्क और 3.5 मार्क तुमको लिखा पड़ो सो चिंता कर 3.5 मार्क तुम के लिख हाफ पेज ओके तो टोटल जब 270 वर्ड कि 260 वर्ड कि 250 वर्ड लिखिल तुम चिंता कर गोटे में मत के लिखार अच्छी इंट्रोडक्शन अच्छी तादे ठीक तादे कनक्लूजन अच्छी मिनिमम तो 15-30 वर्ड से पड़ेगा ना आउ 220 वर्ड रे तुम अच्छी सोर्स फंक्शन रिक्वायरमेंट डेफिशिएंसी तो गोटे गोटे के पड़ा 50 वर्ड 60 वर्ड देखो फास्ट सोर्सेस जमी मुझे कहली आम बेसिकली दुटा पार्ट डिवाइड करवा वन इज योर एनिमल सोर्स वन इज योर प्लांट सोर्स एनिमल आउ प्लांट एनिमल सोर्स कौन हम एनिमल सोर्स लाइक रेड मीट एनिमल लिवर ओके चिकन लिवर हो मटन लिवर व्हाटएवर पोल्ट्री मीन्स चिकन डॉग ये सब गुड़ा देन फिश एंड एग रेड मीट liver poultry fish and egg talking about the plant foods first is leafy green vegetables like spinach kale leafy green vegetables then lentils like dal beans nuts whole grain cereals आउ तुम ये मिलेट भी ऐड कर पार लाइक रागी दैट इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ आयरन एटा सरला सोर्स नेक्स्ट कम टू फंक्शन आयरन फंक्शन कौन फास्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आयरन इज की टू हिमोग्लोबिन व्हिच कैरिड ऑक्सीजन इन ब्लड आम जानी ब्लड सेल रे तार कलर जो रेड आसे दैट इज बिकॉज ऑफ हिमोग्लोबिन and hemoglobin is responsible for carrying oxygen in the blood आमर जिते सब organs अच्छे दरकार ऑक्सीजन दरकार तो से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करे हिमोग्लोबिन आ हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन रे आयरन रो की रोल अच्छे देन सेकेंड फंक्शन ऑफ आयरन इज एनर्जी प्रोडक्शन सपोर्ट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी आयरन रो यदि तुम फंक्शन देख इट इज वेरी मच क्रुशियल जो आयरन रो डेफिशिएंसी हुए से कौन हुए द डिजीज इज एनीमिया सिकल सेल एनीमिया शुणी थो सब ना सिकल सेल कौन हम ब्लड सेल विल बिकम लाइक दिस से सिकल भाई देखा एमती रहा कथा ना हेल्दी से एमती देखा अधा चांद भाया fine so they can't carry oxygen and the biggest thing is anemia re india re almost 50% male are affected by anemia women mane audio अधिक 65% पाखा पाखी हेबे okay we'll see the number also first देखले हमें oxygen transport रे help करछि second देखले हमें enzyme production support cellular respiration and ATP production ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट जोटा कि act as the energy cell or powerhouse of the cell ATP third function is immune function helps WBC production WBC stands for white blood cell
white blood cell production रे ଆଉ strengthen the immunity, that is a function of iron. Then cognitive development, जो पिला माने जो children is affected by less or deficiency of iron, तार brain memory cognitive function ए सब develop हो परिवानी. So iron is essential for cognitive development of any child. Then enzyme activity, DNA synthesis ପାଇଁ enzymatic reaction ପାଇଁ ଆମକୁ iron ଦରକାର. पांचटा फंक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कला, एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एनर्जी एंजाइम एक्टिविटीज, एतिक तुमको देखियार अछि. देन सोर्स सरला, फंक्शन सरला, रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट as for ICMR, RDA as for ICMR. ICMR is कौन कहते हैं? ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, and RDA stands for recommended dietary allowance or recommended dietary allowance. Okay, DIETARY, dietary allowance. RDA as for ICMR. मेन मेन के दरकार 8 मिलीग्राम पर डे, 8 मिलीग्राम. मेन 8 मिलीग्राम, वुमेन 18 मिलीग्राम, चिल्ड्रेन 27 मिलीग्राम, सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन 27 मिलीग्राम and children 7 to 15 मिलीग्राम. मेन 8 मिलीग्राम, वुमेन 18, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर 27 मिलीग्राम, और चिल्ड्रेन 7 to 15 मिलीग्राम. एंड द लास्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन डेफिशिएंसी कौन कौन हम? फर्स्ट थिंग is iron deficiency anemia. First disease is iron deficiency anemia. The symptoms are fatigue, weakness, pale skin and shortness of breath. Iron deficiency anemia re the effects are fatigue, माने किछि टिके काम करते थकी जिवे बिकॉज ऑक्सीजन पहुंच पारने ना, थकान आसीबो. वीकनेस, दुर्बलता, पेल स्किन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. टिके बाट टिके सीढ़ी चलथिबे माने कोन हाफ जोडा कोन कोन कहया माने जोर जोर निश्वास प्रश्वास नेबे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही जो तांगर. देन इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर्ड हे जो माने प्रॉपर्ली फंक्शन करि परिबोनी. अफेक्ट्स द मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड लीडिंग और एंड लर्निंग एक्टिविटी. मेमोरी कमिबो, कंसंट्रेशन कम होबो, लर्निंग एक्टिविटी भी अफेक्टेड होबो. थर्ड इज अबाउट इम्यूनिटी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस. जेहेतु आयरन कमी थिबो, बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देखै परिबोनी, तो जेते सब डिजीज आसीबो ताको से फाइट कर परिबोनी बिकॉज ऑफ दैट इम्पेयर्ड इम्यूनिटी. तो ससेप्टिबिलिटी, दैट मीन्स चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल राइज. कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी can cause premature birth and low birth weight. माने जति कि दरकार ना 10 month हवा गुरु पिलार जन्म हो जिवो. आ बर्थ वेट जति कि रिकमेंडेशन हवा गता 3.5 रु ऑलमोस्ट 4.5 केजी पाखा पाखी, सेटा भी 3.5 और 2.5 केजी जहाँ भी अच्छी बर्थ वेट रे भी कम आसो. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक बर्थ वेट केते हवा गता. बर्थ वेट, हाँ ठीक अच्छे, 2.5 रु 3.5 केजी, 2.5 रु 3.5 केजी एतिकी तार बर्थ वेट हवा कथा. जदि ताठू कम आसी दैट इज लो बर्थ वेट. जे लो बर्थ वेट आसी माने देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस, माने से जो पिला बॉर्न होला देयर माइट बी सम deficiency, might be cognitive development एत भल होइनथियो, might be some organ may not proper function properly, so might be some medical complication. So a balanced diet with iron rich food along with enhancer like vitamin C helps prevent deficiency and related disorder. So this is all about the iron.
नेक्स्ट क्लास आम स्टार्ट करिया ओमेगा फैटी एसिड फाइन ओमेगा फैटी एसिड आम स्टार्ट करिया एंड विल मूव ऑन सो दिस इज द लास्ट फ्री लेक्चर जमती मु कही क्लास स्टार्ट रू इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स you can message okay you can message us on telegram on whatsapp or you can even call on the given number. The number is 7989778247. Okay, thanks for watching the lecture. Have a great day.